In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, may the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of us. Assalamu alaikum students. Now today I will start a new chapter, and it is a very interesting topic because today you will learn something new, something special in this chapter. Now first, see the picture. Can you see the picture? Your answer is yes. We can see the picture with our eyes. Okay. See the next picture. Oh, what happened? My question is, can you see the picture in the dark? Your answer is no. Is it? Yes, it is. If there is no light, we are unable to see this picture. And we are able to see picture because of the light. So today you will learn about the light and its behavior. So what is light? As you know about the light is a form of energy and it travels in a straight line. And we can represent a ray of light using a straight line with an arrow to show the direction of travel. So light is a form of energy, right? Now we will learn about the reflection of light. It is a very easy. What is the reflection of light? Reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium on hit the surface of any object. It means कि अगर आप लाइट को किसी सरफेस पर हिट करते हैं तो लाइट बाउंसिंग बैक हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बॉल को हिट करते हैं किसी भी सरफेस पे या बॉल पर तो बॉल जो है वो वापस आपके पास आती है. इज़ इट? ऐसा है ना? तो सेम एज यही फिनोमिना लाइट पर है. बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ सी द डायग्राम. जब आप एक लाइट को हिट करते हैं किसी भी सरफेस पे, जैसे इस डायग्राम में एक टॉर्च है और टॉर्च की लाइट हिट कर रही है एक सरफेस पर, राइट? तो जब हिट करेगी इस सरफेस पर तो ये लाइट जो है वो बाउंसिंग बैक हो जाएगी. फर्स्ट लाइट जो हिट कर रही है वो इंसिडेंस रे कहलाती है, और जो रिफ्लेक्शन हो जाती है, जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट, वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है. और इनका जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. हैव यू गॉट इट? जब एक लाइट को किसी मेटल सरफेस पे, किसी ओपेक सरफेस पर हिट करते हैं तो लाइट जो है वो बाउंसिंग बैक होती है, राइट? हैव यू गॉट इट? So the reflection of light is the phenomenon of bouncing back of the light in the same medium on hit the surface of any object. इसकी एक और एग्जाम्पल, आप रेगुलर बेसिस पे मिरर देखते हैं, राइट? तो ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. किस तरह से? जब लाइट आप पर पड़ती है तो वो लाइट मिरर पर हिट होती है और मिरर से हिट होने के बाद वो लाइट दोबारा से बाउंसिंग बैक हो जाती है. तो आप इजीली अपने इमेज को देख लेते हैं. मिरर आपने देखा होगा कि जिसमें आप अपनी इमेज देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? मगर उसका जो बैक साइड होता है वो पॉलिशिंग होता है. उस पॉलिशिंग की वजह से वो लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट से या इस मिरर से अंदर ट्रेवल नहीं करती, बल्कि उसकी सरफेस से, मिरर की सरफेस से ही बाउंसिंग बैक हो जाती है. आप देखें कि एक ग्लास है जो कि आप मॉल्स में जाते हैं और एक ग्लास के जो है वो डोर होते हैं, तो वहाँ आपको अपना इमेज नज़र नहीं आ रहा होता, बल्कि वहाँ से जो लाइट है वो
स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, वो बाउंसिंग बैक नहीं होती, इसलिए तो इमेज नज़र नहीं आता। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो मिरर में से इमेज क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ लाइट बाउंसिंग बैक हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि एक सरफेस तो इसकी ट्रांसपेरेंट है, मगर मिरर की दूसरी सरफेस क्या है? पॉलिशिंग है। उस पॉलिशिंग की वजह से वो लाइट जो है वो बाउंसिंग बैक होती है और आप इसीलिए अपना इमेज देख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। हैव यू गॉट माई पॉइंट? नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. There are two types of reflection of light: regular reflection and irregular reflection. Now see the diagram. This is the regular reflection. When the reflection, or you can say when the reflecting surface is smooth and well polished, the parallel ray falling on it are reflected parallel to another. Now see the picture. In this picture it shows the smooth surface. आप surface देख सकते हैं कि smooth surface है, right? जब incident ray, जब light hit करते हैं तो वो ray क्या कहलाती है? Incident ray. जब incident ray एक surface पर hit होती हैं तो parallel ray जो कि reflected ray होती हैं बाउंसिंग बैक होती हैं। इंसिडेंट रे बाउंसिंग बैक होती है एक पैरेलल फॉर्म में। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ जो है वो रिफ्लेक्टेड रे बनती हैं। दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। हैव यू गॉट इट? जैसे मिरर में आप अपना इमेज देखते हैं तो वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि उसकी सरफेस भी स्मूथ होती है। तो जिनकी सरफेस स्मूथ होती है और उस ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं वो पैरेलल फॉर्म में होती हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ रे बनती हैं, तो उन्हें रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। नाउ व्हाट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन? नाउ सी द डायग्राम. When the reflecting surface is rough, the parallel ray falling on it are reflected in different direction, or you can say this is the diffuse reflection. जब एक रफ सरफेस होती है, उस रफ सरफेस पर लाइट हिट होती है जो इंसिडेंस रे बनती हैं, और जब लाइट हिट होती है किसी भी रफ सरफेस पे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इट इज़ द phenomenon of refraction takes place when the light passes from one transparent medium to another. When light rays pass from one medium to another medium, they change their direction, and this change in direction of light rays is called refraction of light. Now by the help of example you can understand easily. Look at the pencil in this photograph. We know the pencil is straight, but it looks bent. Our eyes are being tricked into seeing something that is not true. This happens because light travels more slowly through the water than it does through the air. As a result, when the rays cross the boundary between the water and the air, they change direction. This change in direction is called refraction, and we say that the rays have been refracted. जब आप ग्लास में पेंसिल डालेंगे तो वो सही पोजीशन सही साइज पे नज़र आएगी, मगर जब आप वाटर इस ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा कि मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी कि लाइट जो एयर से ग्लास में एंटर हो रही थी अब उस ग्लास में वाटर है,
तो वो लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल हो रही है। इट मीन्स कि मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का। जब मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट की डायरेक्शन बेंड हो जाती है। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं। Take an empty cup or beaker or glass and place a coin at its bottom. Okay? Now position yourself such that the coin is just not visible. And pour some water into the cup or beaker or glass without disturbing the coin. Now what do you observe? You will observe that as the water level rises, the coin appears inside. You know that you can see an object because rays of light from the object reach your eyes. When the coin is not visible to you, the rays of light traveling in a straight line do not enter your eyes. As soon as water is poured in the cup or glass, the rays change the direction and you can see the coin. Therefore, we observe in the above examples that the light traveling in a straight line in a particular medium bends as soon as it enters another medium of different density. It means that कि लाइट जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मगर जब मीडियम चेंज होता है तो वो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। हैव यू गॉट माई पॉइंट्स? नाउ आई विल टेल यू अबाउट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। What is loss of refraction? There are two laws of refraction of light. The first one is, now first see the picture. It shows the incident ray, refracted ray and normal. So ये तीनों रेज जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं. For example, the incident ray, the refracted ray and the normal to the surface of the point of incidence all lie in the same plane. And the second one is that the ratio of the sine of the angle of the incidence to the sine of the angle of refraction is a constant and is equal to the refractive index of the second medium with respect to the first medium. Now this is the loss of refraction and it is also known as Snell's law of refraction. क्यों कहा जाता है Snell's law of refraction? क्योंकि ये Snell साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था. I will continue the topic refractive index. Now what is refractive index? This is a measure of how much light slows down when it goes into a new medium. What does it mean? It means that कि एक लाइट कितनी स्लोली ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में जब वो दूसरे मीडियम में जाती है, या लाइट कितनी स्लोली ट्रेवल कर रही है जब एक मीडियम में जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे मीडियम से, राइट? And see the formula of refractive index. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इजीली जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड फॉर मीडियम और it is denoted by mu and c for speed of light in vacuum divided by v speed of light in medium. Index of refraction, it shows the symbol of n is equal to c divided by v. C for velocity of light in vacuum and v for velocity of light in medium.
Or you can say the speed of light in different substances varies. Therefore, different substances have different abilities to bend or refract light. This bending ability of a materials is known as index of refraction or refractive index. Right? Now see the different medium and the different speed of light. The speed of light in air is approximately 3 lakh km per second. The speed of light in water is approximately 2,25,000 km per second. The speed of light in glass is approximately 2 lakh km per second. Now see the speed of light in different medium. Now I will start a new topic, dispersion of light. The phenomenon of splitting of white light into its different components color when passed through a prism is called dispersion of light. Now by the help of diagram you can understand easily. This is the light. When you hit the light in transparent prism, so splitting of white light into different components color when passed through a prism is called dispersion of light. जब white light को किसी भी transparent object से hit करते हैं, for example prism पर hit किया, तो white light 7 colors में split out होती है. वो कौन से colors होते हैं? There are 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. अब आप किस तरह ये याद रखेंगे इन कलर्स को? आप बहुत इजीली इन कलर्स को याद रख सकते हैं by the help of one word, विबग्योर. आप विबग्योर वर्ड याद रखें. These are the 7 colors. The phenomenon of splitting of white light into its different components color when passed through a prism is called dispersion of light. This process is known as dispersion of light. And V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. This is the Vibgyor, right? Have you seen the rainbow? आपने रेनबो देखा है? रेनबो में भी यही 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर होते हैं. किस तरह से ये रेनबो बन रहा होता है? And the rainbow is a very common example of dispersion of light in nature. How is it formed? After rain, tiny droplets of water remain suspended in the atmosphere. When the sun appears, the light gets disappear by refraction through these drops of water. As the result, rainbow appears in the sky, and this process is known as dispersion of light. आप खुद भी बहुत इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं. आप कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लें या कोई ट्रांसपेरेंट स्केल लें, जहाँ सनलाइट आपके घर में आ रही होती है, उस स्पेस पर आप वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को मूव करें. आप देखेंगे कि डिफरेंट कलर में वो वाइट लाइट स्प्लिट होगी, और वो डिफरेंट कलर क्या होंगे? वो विबग्योर होंगे. ऑब्जर्व इट. Okay, have you got my points? Now home task, short question. Question number 1, what is the speed of light in air, water and glass? Question number 3, what do you mean by refractive index? Also write its formula.
long question. Question number 2. What is refraction of light? State the laws of refraction. Question number 4. What is the dispersion of light? And write the names of the 7 colors which white light is split into. Now this is enough for today, and I will continue the chapter in next class. Take care beta. Allah Hafiz.